अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा इशू है फॉर रेजिडेंट्स एज वेल एज़ फॉर द न्यू कमर्स इज़ हाउसिंग एंड अकोमोडेशन। कोविड से पहले जो चीज़ें थी दे वर वेरी डिफरेंट। अकोमोडेशन एंड हाउसिंग वाज क्वाइट चैलेंजिंग इवन एट दैट टाइम, बट इट वाज स्टिल मैनेजेबल। आप अफोर्ड भी कर लेते थे एंड यू कुड फाइंड डिसेंट प्लेसेस। बट आफ्टर कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड। यहाँ पर अभी अकोमोडेशन एक्सपेंसिव भी है एंड इट्स वेरी कंपैरेटिव। यहाँ पे ऐसे केसेस भी होते हैं कि अगर देयर इज़ अ गुड प्रॉपर्टी दैट्स आउट इन द मार्केट फॉर लेटिंग, उस पे 20-20 30 व्यूइंग्स होती हैं। बाकायदा यहाँ पर बिडिंग वॉर्स होती हैं। पीपल आर विलिंग टू पे मोर 300-400 pounds मोर दैन द आस्किंग रेंट जस्ट टू गेट दैट प्रॉपर्टी। सो द सिचुएशन इज़ कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ प्रॉपर्टी नाउ एंड इवन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इवन इफ़ यू आर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी, मच मोर देन द आस्किंग प्राइस, यू आर स्टिल नॉट गारंटेड कि आपको वो जगह मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप ओवरसीज़ से आ रहे हैं दैन इट्स इवन मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस उस तरह नहीं होंगे। यहाँ पे जो स्टेट एजेंट्स हैं जनरली दे डू सम काइंड ऑफ रेफरेंस चेक्स। और एडिशनली इफ़ यू गॉट किड्स दैन इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, ये स्टेट एजेंट्स हैं, दे वोंट लेट प्रॉपर्टीज़ टू पीपल हु हैव गॉट किड्स ड्यू टू वट एवर रीज़न। और इसकी रीज़न क्या है? इट्स नेचुरली अ डिस्क्रिपेंसी इन सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इस मुल्क की अपनी, एंड एडिशनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन हैपनिंग। सो सिंपली यू डोंट हैव enough housing being built to meet the demands of a growing country and growing nation. So accommodation is something, if you're new to the country or you're about to arrive, it's something you shouldn't take lightly. इस तरह की सिचुएशन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं होता, बट देर आर थिंग्स विच यू कैन डू विच विल ease out the situation for you and make it bit more manageable, and long term of course you will have a permanent solution for this। ठीक है। तो इसमें there are few things based on my experience I can recommend। जो पहली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जनरली लेटिंग तो स्टेट एजेंट्स के थ्रू होती है, बट इफ़ यू नो समवन प्राइवेटली, जिस तरह आपके कोई जानने वाले हैं या उनके आगे कोई रेफरेंसेस हैं, द पीपल हु हैव गॉट प्रॉपर्टीज़ विच दे आर लेटिंग आउट, ठीक है, देन यू शुड अप्रोच दैम। सेकेंडली ये है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स राइट मूव वगैरह, जूपला है, एंड इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट तो यहाँ पे वो स्पेयर रूम है, और इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं विच आई विल पुट ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई दोस, यू कैन अप्रोच पीपल थ्रू दोस। थर्डली ये है कि यू शुड बी बिट मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ योर एरिया एंड द पैरामीटर। सो लेट्स से अगर आपका कॉलेज है या आपका काम है एंड दैट्स अ सर्टन place, then you should be flexible, you should be mentally ready कि आपको exactly वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। You will have to commute, you will have to stretch out a bit, probably at an hour's commute or even a bit more in the start, and then naturally with time things will get better for you। लेकिन and lastly ये है कि there in the worst case scenario you could be in a situation जहाँ पे अकोमोडेशन नहीं अरेंज हो रही, एंड देन अ लॉट ऑफ स्टेट एजेंट्स यू आर अप्रोचिंग even once you have got here and they are not willing to let you out. In that situation you might have to pay a bit extra to stand out out of the options. You could be in a situation where you have to pay like initial, instead of a 1 or 2 months deposit generally यहाँ पे लोग देते हैं, you might have to pay a bigger deposit, let's say 4 to 5 months of advance, to kind of provide a bit of more reassurance to the estate agent and to the owner. So this could happen, and I've seen this happening in some cases. So you should be mentally ready for these kind of situations, and you should be even financially ready for these, to deal with these kind of situations, ठीक है। So other than that, I wish you luck, and I really hope कि things work out for you if you're arriving, and all the best for this. Thank you so much.